welcome back. Well, this is our personal finance corner, and we have Hemant Rustagi joining in to give us a couple of his answers to personal finance queries. And we have Sarthak Bal, who writes to us from Mumbai, and he wants to know the future of gold mutual funds. Hemant, over to you. Well, I don't think really the future of gold funds look very promising, because we're seeing recovery in the US economy and the equity markets are doing well and likely to do well. But then that's not the only factor that you look at when you invest in any asset class. The important thing also is to look at what is the likely role that asset class is going to play. So if the objective is to accumulate gold for a specific purpose, like wedding in the family or something like that, so I think these are good times in the sense that if somebody wants to invest on a regular basis, he can continue investing through SIP. But if that is not the case, one is looking at only purely from return point of view, and if there is a time horizon of 4 to 5 years from now, my recommendation would be that look at a balanced fund, for a time horizon of 4 to 5 years, rather than looking at gold fund. So a couple of funds that can be looked at is ICICI Pru, Balanced Advantage Fund and Tata Balance Fund. Okay, let's get in the next caller as well. It's Chetan Negi who calls us from Amritsar. Hi. Hi Chetan. Hi Chetan here. पूछिए आपका सवाल. हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था एक्चुअली कि जैसे नॉर्मल SIP होती है मंथली, कुछ वक्त पहले मुझे जानकारी मिली कि एक डेली SIP भी आती है. तो आई वांट टू नो कि डेली SIP के फायदे क्या है या नुकसान क्या है एज कम्पेयर टू मंथली SIP, और कौन सी म्यूचुअल फंड ये SIP ऑफर करती हैं. Okay, Hemant, interesting question. Would you recommend a daily SIP, and if you could answer in Hindi? चेतन, देखिए SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कुछ तरह का डिसिप्लिन आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आ जाता है. ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो हैं वो वीकली और मंथली SIP देते हैं. डेली इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन आपको मिलती है STP के द्वारा, जिसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहां पे आप लमसम पैसा जो है डेट फंड में डालते हैं और वहां से पैसा आप निकाल के इक्विटी में डालते हैं. और ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये डेली या वीकली करने से आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू मंथली. इनफैक्ट आपका जो प्रोसेस है वो ज्यादा कम्बरसम बन जाता है. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप मंथली करें, एक या दो फंड लें. कभी भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 2 फंड हो आपके पोर्टफोलियो में, 2 डिफरेंट डेट ले लीजिए. आई थिंक वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप हर रोज पैसा इन्वेस्ट करें. Okay. All right, Hemant, we leave it at that. Thanks very much for joining in and solving a couple of queries for us. Well, that's all the time that we have on Halftime Report. Business Lunch is up next.